So now today, yeah, you have to pay attention to whatever I say, like always, and then we will work on certain aspects of our language. First and foremost, I'm sure you all know that there are 4 aspects of a language. Okay, reading, listening, then speaking, and last is writing. So any language we learn first by listening, then we speak, then we learn to read, and writing is the last thing we do. Okay, it is the last aspect. Once we have become like really well versed with the language, then we are able to write, like write sentences. Hold on. Your voice is not audible. I can hear a class, like, there's a lot of talking. I want everybody's attention. I request the teachers to please take charge if the class is taking noise and I'm yeah. Okay, we have only 40 minutes and I want to finish this particular as chapter or whatever, like, in your presentation. Ma'am, your voice is not audible. You can't hear me? No, ma'am. But when I say you can't hear me, everybody's saying yes, no, ma'am, no, ma'am. So what is it? Am I audible now? I'm like trying to talk a little louder. Am I audible now? Ma'am, your sound is low. Okay. Sound low. Which class is talking a lot? There are a couple of Okay, Tolstoy class. Excuse me, I don't want any noise. Whichever class is talking, be quiet. And teachers, please take charge. I think so. It is Walter room which is talking. And Tolstoy, please give us your camera control. Please give us your camera control. I want camera control from Socrates. I want from Miletus. I want from here. Okay. So while this is happening, please Tolstoy, give me your camera control. Okay. So basically, in English, you have different sounds, like, when you're learning a language, you learned ABCD, and I'm sure with ABCD, you were taught like the phonics, you were taught A, B, B, like, but it is not B. What we do is, this is a major flaw when we are learning. We say B, B. B is in Hindi. Okay. In English, we have like softer sounds because every language has its own way of like own sounds. Please pay attention to this if you want to improve your spoken English, which is very important. Okay, so here we have like B is B and not B. When we say B and we not say B, C is K and not K. Okay, and C is also S. Sometimes C is like S and sometimes C is like K. But it's not K or S. Okay, that is how we make a mistake. Because sounds, then we start pronouncing them in the Hindi or Punjabi way, and that makes a mistake. There we make a mistake. And another thing is that we make a mistake when we don't listen to the language properly. Okay, and that is, I'm not saying it is something very wrong, because every place, every area has its own dialect, its own way of speaking.
So what we hear, we learn. Okay. Here we are getting a chance to work on certain aspects of our language. And I want all of you to pay attention. And then you can do a lot of things by yourself to make your English, you speak your English like a pro. Like you need vocabulary, you need correct pronunciation, you need that fluency. And how will that fluency come? When you will start practicing. Okay. I also come from a purely Punjabi speaking family, but I paid attention to all these aspects, and that is why I was able to teach even in America. Like, even they liked my English and they gave me a chance to teach in high school. And I want each one of you to do very well there. Okay. So here today we start with digraphs. Okay. We start with digraphs. They are two consonants. I'm sure you know what are consonants. Okay, we have 5 vowels: A, E, I, O, U. They are the sound words. And we have rest all the words from the 26 alphabets are known as consonants. When two consonants are put together and they become only one sound, okay, it is called a digraph. It is called a digraph. Okay, so I hope everybody has understood this. Don't stop camera control. But camera control do आप. Clear on करो. Okay. Okay, we'll start this now. You have this, and today we are going to learn about CH sound. Okay, we are going to learn about the CH sound. So everybody, can anyone come and tell me what is the sound CH? Together when it is put together. Okay, CH sound is what? Who will come forward and tell me the sound? Yes, what? But you can come again. Karl Marx, that boy who came. Could you please come again and tell me what the sound is? I could not hear you. Yes. Yeah. So it is. See, now this is the difference. It is ch. It's not ch. It is ch. It's ch. Please don't say church. If we will say church, the pronunciation goes wrong. Okay. Thank you, beta. You came and you told. Okay. And I'm very proud of you that you came and you told. So it is ch. So it's church. We don't say church. When we say church, it becomes like an accent of our own mother tongue. Okay. Immediately. And then वो साफ पता चलता है कि we are not English speakers. Although we will know all the words, we'll know everything, we'll have grammatically correct things, but it will still, we will feel that, okay, I'm not a native speaker. I'm not speaking very well. Okay. So here we will pay attention to small little nuances so that you can also improve your spoken part. Okay. I know you all are very smart children and you'll be able to do this very well. Okay. Here we come. So today we are going to do this. Okay. Now this ch is like, no, can you give me an example of a word with ch? I have given here 1 or 2. I have given some examples. But you will be surprised. You will be surprised that this sound, who is continuously talking? Whichever teacher is in that class, please take charge. I can't see anyone talking here, but I can hear a lot of noise. So I don't know which class is not talking. Yes. Yes, I can see Karl Marx. They have raised their hand. Come forward. Come forward and answer. Okay. So here we have 3 different sounds. 3 different sounds associated with it. Okay. The 3 different sounds are
Which are the three different sounds? First and foremost, this is known as again, please pay attention. This is written as digraph. It is like, die. It is pronounced as digraph. Okay. Now here, die means two. Uni means one, like uni. If I write in front of anything uni, it is like one. Okay. And die is two. Try is three. I'm sure you know all this. So when I say digraph, that means two letters. And the two letters are going to be two consonants. Okay. Two consonants. When you will put them together, it will make one sound. One sound. Okay. But this ch is making three different sounds. This ch is making three different sounds. Okay. And they are given in the sheet. The first sound is ch. Okay. So the first sound is ch. It is making ch. Okay. This sound. The second sound is k. And the third sound is sh. Okay. So this ch is making three different sounds. One is ch, one is k, and the third one is sh. Okay. It is making like a sh sound. Okay. These three different sounds. Now, all the words, you will wonder why. Now see, in English, we borrowed a lot of words from different languages, Latin, German, Old English, okay, French, Italian, like a lot of amalgamation of a lot of words. All the words which came from Old English and a few French words, they make in that CH makes ch sound. All the words which are with k, they came from Greek language, and all the words with sh from French language. Okay. Today we are going to do this. Now, do you read I want one of you to come and read the sentence I have written. The chef added cherries to the Christmas pudding. And you can tell me what is the difference in the sound of ch in all three. I want to know the sound of ch in all the three. All chef, cherries, Christmas. So what is the difference? I want you to come. One of you to come and answer. Come forward. I want one of you to come forward. Please do come. I want you to, who will come? Who will volunteer? But when learning can never happen if we don't interact. If I go on talking, 50% of this learning is happening. You talk, if it's like conversation, okay? And I like interactive classes. I like to speak less and I want you people to speak more. Ask questions, that would be the perfect way of learning. Like more questions, and I will take a class where you will only ask me questions and I'll answer. Okay? And then I can take a class like I don't want to be always like the person asking questions and you people answering. So you should also have questions for me. Okay. So who will come from Karl Marx? Anyone who's interested in coming? Come forward. You just have to read the sentence and tell me the three sounds each word is making. Okay? The three different words. Okay, who will? I want someone to come forward. Yeah, I can see a hand raised. Militants, do come. This you have to read a sentence and tell what kind of three sentence words are using. So, no, who will come forward? Then I have to call out the name. Okay. I love giving chances to my students. Okay.
Socrates, from Socrates, I want Sargon and Deepak to come. From Socrates. Yes, Sargon and Deepak, please come forward. ये वाले class का ठीक करो camera. Socrates, The chef and cherries. wait, let her speak. Okay, speak better. The chef and cherries to the Christmas pudding. Okay, now see, the first one was not pronounced. It is the chef. Okay, the chef and the cherries. Cherry. Okay, we say cherries because we are using cher. So the chef and the cherries. Okay. Christmas. Okay, Christmas pudding. So Tino sounds are we? Chef is the sh sound. Okay, cherries is the ch sound, and Christmas is the k sound. So all the three different sounds are there in this sentence. Now you have to. I want all of you to read this. Chester cheetah chews a chunk of cheddar cheese. Who will come and speak only the first line? Who will come? Just a minute. Come to Karl Marx room. Thank you, little girl, for coming forward and speaking that sentence, right? Okay. Who will come forward from the Russell house? Okay. Sanamdeep from Russell. Sanamdeep from Russell. Okay, you're coming? Karl Marx, you're coming? That girl, come. You all, now see why they are called tongue twisters and why we use them? Because see, when we speak one particular language, हमारी ज़बान वैसे हो जाती है. Like, we open our mouth that way. But when we learn another language, we have to practice it. Okay, we have to know where to open your mouth, big, small, rounded, tongue. So they are called tongue twisters. And when you will repeat the same things again and again, it will give you more practice. So this is like more practice, and please go through them. I want each one of you to repeat them in your mind continuously. Continuously repeat them in your mind. Yes. So here's that little girl from Karl Marx. Could you read only the first line? Chester cheetah chews a chunk of cheap cheddar cheese. Very good. Very good. Chester cheetah chews a chunk of cheap cheddar cheese. Chester cheetah, like, you have to continuously speak it, that's why they call tongue twisters. Now, who would like to come and speak the next line? Come and speak the next line. Okay. I will call from Walter House. I will call Mohri. Mohri. Okay, Walter classroom. Mohri, I want you to come out. Please come out. You will all love it. When we make this class more interactive, you will all really love it. Okay, I'm telling you. So would you come? Where is Mohri from Walter? From Walter House, ma'am, we don't have a camera control yet. So I can't position the... Okay, Mohri, would you come read out the next. If the chunk of cheese. Okay, if the chunk of cheese chunk Chester cheetah. Okay, if the chunk of cheese chunk Chester cheetah. Okay, now I want somebody to come and speak the third line. What would Chester cheetah chew and chunk on? What would Chester cheetah chew and chunk on? So who will come? Volunteers? Any volunteers? Or I can call from Descartes. I can call Sunidhi. Descartes. We don't have Descartes today. Okay. Militars, I want Dibnoor. Militars, I want. Yes, Dibnoor. Please come forward and speak the third line.
And then I want a brave one to come forward and speak all the 3 lines. Okay? I want a brave one to come and speak all the 3 lines like in one go. Okay, who is accepting the challenge to come and speak all the 3 lines? बच्चे we just wait. Let us please pay attention. It is cheddar. Okay, cheddar नहीं होता, cheddar है. Chester, cheetah, chew a chunk, cheese, cheddar. It's a chunk of cheese, chunk. What would cheddar chew and chunk on? So I want somebody to come and I was 100% sure there'll be many people like they would be liking to come and speak. Come beta, this is fun. Nothing is wrong. Even if you speak wrong, nothing is going to happen. Okay, come. You will only learn. So I want many of you to come forward. Okay, then I'm calling 4 people and all 4 of you are going to repeat the whole paragraph. First one is from the Socrates, I want Deepak out. Tolstoy, I want Tirambika. From Plato, I want Vedika. And from Miletus, I want Krish. Please come out and all 4 of you are going to speak all the 3 sentences together. Come on. Okay. Nobody is coming out? I called out the names. I want the children out. And I want you out in the next 10 seconds. Out. Come on. From Miletus, I can see a boy standing there at the end. Would you go to the mic? Manchester the chunk of cheap cheddar cheese. If the chunk of cheap chocolate Chester cheese, what would Chester she and chunk on? Okay, wonderful. Go back. Thank you. Next, who will come? Do you think, how many of you? I don't want to point out here. How many of you think? See, I have a feeling that we learn something, we should learn it. We should make that effort to make that perfect for ourselves. Okay, it's our learning process. It's not funny. Putting time, we are getting and putting time to it. Okay, next. Next who will come? That's the cheetah. Chunk of cheap cheddar cheese. A chunk of cheddar cheese. What would the cheetah chew and chunk on? There were 4 people I called out. Okay, where is yes, start. Tirambika. I want Yes, ma'am. read it out. Chester cheetah chews a chunk of cheap cheddar cheese. If the chunk of the cheese chunk the Chester cheetah, what would Chester cheetah chew and chunk on? What would? Okay, would. Okay. Great. Much better. Next, who will come?
Krish, I want Krish to speak now. Krish, Hurry up. Not quick now. Okay, sorry. okay, come on, quick. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, I want to speak. okay, come, speak. Most welcome. Chester, cheetah, Okay, one by one. First, let Krish, then you can speak. Okay? Chester, cheetah, chase a chunk of cheap cheddar cheese. I say 8 minutes. See, we don't want to make it funny. Right now, we have been saying cheddar. आप cheddar सुन रहे हो? आप सुन रहे हो तो आप cheddar बोलो. Okay? Yes. Chester cheetah. Choose a chunk of cheap cheddar cheese. बोलो. Chester cheetah choose a chunk of cheap cheddar cheese. If chunk of cheese chunk Chester cheetah, what would Chester cheetah chew and chunk on? Very good. Very nice. Very interesting. Who else would like to come and speak one more time? I want one more person who can. Who has been listening to the pronunciations and who will come and speak here? Yes. Okay. Come on. Yes. Come. May I speak? Yes, Beta. Go ahead. Chester cheetah chews a chunk of cheap cheddar cheese. If the chunk of cheese chunk cheddar cheetah, what would Chester cheetah chew and chunk on? Perfect. Beautiful. Beautiful. I'm so happy. Some of you were paying attention to the pronunciation. Very good. Very nice. Okay. So now, okay. Now we have these words, and I would like someone to come and you can pronounce these words. Let me see how you pronounce them. Okay. So we have words. We have used ch sound. Ch sound we have used. Now it's the k sound. Okay. So let's see how many of you will use the k sound correctly. Okay. अभी क नहीं इंग्लिश में क नहीं होता है. You have to remember it's k. इंग्लिश में च नहीं होता है. You have to remember it's ch. इंग्लिश में स नहीं होता है. It's s. Okay. Sh. This is like sh. Okay. So could you please come here? And I want one of you to come here and repeat these words like anchor, anchor. Okay. Chaos, chaos. I'm sure everybody knows the meaning of chaos. Echo, echo. Mechanic. हम यहाँ पे mechanic बोल देते हैं mechanic. No, it's mechanics. Okay. Orchestra, orchestra. Psychology, psychology. Psychology नहीं होता है psychology. School, school भी बोलते हैं कई लोग. It's school. Stomach. Okay. So the k sound is there, and the next words are. This is a brochure. Champagne. इसमें G silent है. Champagne. Chef. This is a color. Fuchsia. Fuchsia. This is a color. This is like a dark pink color. Okay, fuchsia. यहाँ पे like I have heard many people saying fuchsia color. Oh, it's fuchsia. Machine. Mustache. मूछ. जो आपकी मूछ है उसको mustache. Okay. Parachute. Parachute is parachute. Okay. And quiche. Quiche is, I know you people love to eat different kind of pastries. Okay. तो आप एक पेस्ट्री खाते हो ना जिसके अंदर स्टफ्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? You have mushrooms in it, you have cheese in it, something, and it's like a puff pastry. That's actually it's a form of quiche. Yes.
So it is a mixture of eggs and like cheese and milk and all these things and cooked in an oven. Okay, so this is quiche. Because this is it's unbelievable. I can still hear a lot of people talking. Okay, you have to pay attention to understand all this. And this is going to be like a series every time, and I would expect all of you to at least learn 5 new words today from this and improve upon your pronunciation and understand the language, the basic aspects of the language. So that is my intention, and I want you to have the same kind of intention, the learning part. Okay, and I want all of you to ask me questions and interact so that when we talk, we understand. Okay, when somebody will come and speak, I'll know whether you're speaking it right or needs to improve upon. Okay, so these are some important aspects. My last question was, think about 5 words for each ch sound, each ch sound. Okay, so it's ch, it's ch, and it's k. So just think about 5 words for each and write here. There are lots and lots of words. When you start thinking, I'm sure you'll be able to get them. So this is your homework for next time. And then we will do some sentence making in the class and like we'll exchange some other things and some spoken parts. I'll bring a lot of spoken parts. I want you people to speak. Okay, so it's going to be a very interactive and fun class. Thank you very much. I hope you learned a lot today and I enjoyed my class. I hope you too enjoyed it. Okay, thank you. Normal बात. We are going to discuss very general things, ठीक है? And you are going to tell me. आप सबने ही मुझे बताया ना, I don't know anything. So today you are my teacher, ठीक है everyone? ठीक है, आप सब टीचर हो, मैं स्टूडेंट, and you have to tell me many things. चलो आजकल ये बताओ, कौन सी ऐसी बीमारी है या कौन सी ऐसी डिजीज है जो फिर से आ रही है, जिसकी न्यूज आने लगी है? अगर हम ये कहें आ रही है, दैट इज नॉट रियल वर्ड, जिसकी न्यूज फिर से सुनने को मिल रही है, इट इज कमिंग नाउ, इतने नंबर्स हो गए हैं, जो आपने खुद एक्सपीरियंस की है आज से 5 साल पहले. सो हु कैन टेल मी? यस, व्हाट वाज द यस यस? कौन सी डिजीज? बेटा आपका माइक ऑफ था. टर्न ऑन योर माइक एंड देन स्पीक अप. वाटर. यस. ना कोरोना, COVID-19, दैट गुड, सबको पता है ना. कोविड एरा सबने देखा था? हैंड रेज करो. किस किस ने पूरा कोविड एरा देखा है? 2020 का, 21 का, सबने देखा है? सभी ने देखा होगा. यू आर आई थिंक 13 years old, है ना? सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा. आप तब उस टाइम 8 years होंगे. ओके, अब मुझे बताओ, अब आप में से किस किस बच्चे का खाना जो टिफिन है स्कूल में कई बार रह जाता है? किस किस का खाना जो है, जो टिफिन बॉक्स है, वो स्कूल में रह जाता है? क्या कभी? यस, कॉल मार्क्स, प्लीज बी साइलेंट. कॉल मार्क्स. बेटा शांत होगे तभी सुन पाओगे. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई एम आस्किंग यू. आप में से सभी किस किस का टिफिन बॉक्स स्कूल में कभी रह गया है? कभी वो आप छोड़ चुके हो, गलती से रह गए. ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट इंटेंशनली यू हैव डन दिस. किस का जो लंच बॉक्स जो है कभी स्कूल में रह गया है बंद? यस. अच्छा, रसल मिस, आई कैन सी वन हैंड इज रेज्ड. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी किसी का कभी लंच बॉक्स नहीं रहा? यस, कभी नहीं रहा किसी का. दैट्स वेरी पर्टिकुलर है, बड़े पर्टिकुलर. अपना खाना नहीं कभी. अच्छा, कॉल मार्क्स से काफी स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं. यस. व्हाट अबाउट अदर्स? टॉलस्टॉय, वॉटर, मिलिटस, सॉक्रेट्स, आपने कभी नहीं छोड़ा? कभी आपका लंच बॉक्स नहीं रहा? ओके, सॉक्रेट्स, आई कैन सी वन हैंड इज रेज्ड. चलो, दैट्स नाइस. अगर जिसका लंच बॉक्स कभी रह गया है, अब वो नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद जब मिलता है उसे खोलते हैं, तो उसमें कुछ कॉटन जैसा स्ट्रक्चर होता है. कभी देखा है दैट स्ट्रक्चर है? या फिर कभी ब्रेड जो है खुली रह जाए, खासकर हॉट एंड ह्यूमिड डेज में, तो कभी देखा है इसके ऊपर जो है कॉटन जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करता है, स्मेल आती है? यस, हैव यू सीन दैट?
See, yes or no? Yes, that's fine. Okay, that's good. That's good. सबको सब पता है. That's really nice. ठीक है, such a good students you are. अब ये जो चीज है, how it is related to our topic now. अब ये चीज जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, that the things that we were discussing, how it is related to our topic. तो सबसे पहले मैंने आपसे जो डिजीज पूछी, ठीक है, that you told me कोरोना, that is COVID-19, ठीक है. अगर हम कहें क्या आप कोरोना को देख सकते हैं, COVID-19 का जो ऑर्गेनिज्म है, जो ये डिजीज करता है, कोई भी बच्चा क्या उसे अपनी आंख से देख सकता है? कैन यू सी दैट कोरोना वायरस इज कमिंग टू अस? क्या आपको दिखता है वो? नो, है ना, हमें नहीं दिखता. अब जो ब्रेड पे जो ग्रो कर रहा है कॉटनी स्ट्रक्चर, क्या आपको दिखता है कि वो वहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है? दिखता है? नो. और अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, जो हमें कोल्ड हो जाता है, क्या हमें दिखता है कोई चीज हमारे अंदर जा रही है जिससे हमें कोल्ड होने वाला है? हमें दिखता है? नो, नॉट दिखता है ना, हमें नहीं दिखता. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो बेटा ध्यान से सुनो, वो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से एज सच नहीं देख सकते, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स. ठीक है, दे आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे होते हैं. अब इनको देखते कैसे? अगर हमें देखना, हमने तो देखो, हमने तो अपनी बुक में, अब आप बोलोगे हमने तो अपनी बुक में ऐसे ऐसे जो है स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, तो इनका तो कोई स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब इनकी कोई शेप होती है. सो यू मस्ट हैव सीन लाइक दिस स्ट्रक्चर, है ना. आप तो बोलोगे हमने ऐसे स्ट्रक्चर देखे हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं, वो तो ड्रॉ किया है. जब हमने इन वायरस को, ठीक है, ये जो वायरस है, या फिर हम कहें ये बैक्टीरिया जो है, या फिर हम कहें कि फंगस जो है, ठीक है, फंगस जो है, इसको हमने एक शेप में ड्रॉ किया है. और इसको असली में देखना हो तो हम कैसे देखेंगे? मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप. Okay, we use microscope to see these tiny organisms because we cannot see them. ठीक है? Is it clear? क्या माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं to see these organisms. अब इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो इनको नोट डाउन करो बेटा. ठीक है, एवरीवन हेडिंग करो माइक्रो. अब इसका हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, हमने ज्यादा नहीं करना. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है इन सब का, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बैक्टीरिया. फर्स्ट इज बैक्टीरिया, नेक्स्ट प्रोटोजोआ, then fungi, and then virus. So these are the 4 organisms that we are going to study. सब इनको लिखो, सब everyone note down this. पहले इन चारों को लिखो, then we are going to understand how they are different from each other. अब बेटा हमारी बॉडी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसकी बनी है? व्हाट इज द, ओके, कार्ल मार्क्स. बेटा सीधा देखो, कार्ल मार्क्स, सिट स्ट्रेट बेटा, यू आर ऑन कैमरा. ओके, योर is also right now, so sit straight everyone. Excuse me, ma'am. Yes बेटा, Ma'am, algae is left. algae is left, not left, it is under this category. ठीक है, इट इज नॉट, कहीं नहीं गया, एल्गी भी यहाँ पर आ जाएगी. अभी हमने एल्गी नहीं पढ़ना, अभी हम कुछ और पढ़ रहे हैं. ठीक है, अभी हम क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया. ठीक है, अब मुझे बताओ जो बैक्टीरिया है, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? किस चीज से जो है हमारी बॉडी बनी है? सबसे छोटी जो चीज है जिसको हमने ऐड करते गए और हमारी बॉडी बनना शुरू हो गई, किसी की भी यस, सेल. यस, सेल. तो वो क्या होता है? सेल होता है. अब बेटा कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका वो एक ही सेल के बने होते हैं. ठीक है,
आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और जो ये यूनिसेलुलर है उनका एक ही ये जो सेल है दैट कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन, सारे फंक्शन यहीं पर होते हैं, डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग हैपेंस हियर, यहीं पर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्यों होती है? सिंगल सेल है, उसकी जो सिंगल सेल है उसका पूरा सरफेस आउटर इन्वायरमेंट के साथ टच में है, सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग कैन हैपन सो इजीली, ठीक है, तभी जो ये चीजें हो सकती है। अब कई ऑर्गेनिज्म वो क्या है, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, वो एक सेल के नहीं बने, बहुत सारे सेल्स के बने, सो दोज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हर एक सेल कुछ अलग काम करता है, क्योंकि अब देखो इस सेल की अगर हम बात करें, इसका जो सरफेस है ये वाला आउटर के साथ एक्सपोज नहीं है, इसका ये वाला पार्ट आउटर के साथ एक्सपोज नहीं है, तो ये सारे काम नहीं कर सकते, सो यहाँ पर हमने जो है काम बांट दिया है, ओके, ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा, ठीक है, सो दैट इज व्हाट टर्म है मल्टी सेलुलर। अब हमने ये क्यों पढ़ा पहले ये चीज, क्योंकि बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर, फंजाई इज मल्टीसेलुलर, सिर्फ एक एक्सेप्शन इसमें आ जाती है, दैट इज ऑफ ईस्ट, ठीक है, दैट इज यूनिसेलुलर। वायरस का भी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वायरस में अलग सा ही अगर हमके थ्योरी है, ठीक है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज जिसके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन सी चीज है जिसके बेसिस पे हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, अब हमने कहा कि ये सेल के बने हैं, ठीक है, वी सेड कि ये सेल के बने हैं। अब सेल के अंदर यहाँ जो बीच में ये चीज होती है इसको क्या कहते हैं, जो अगर हमके कंट्रोल है, व्हाट इट इज कॉल्ड, न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अब जो सारे ऑर्गेनिज्म है उनके पास ऐसा एकदम साफ सुथरा जो हमें एकदम दिख जाए वैसा न्यूक्लियस नहीं होता, तो जिनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस, डिफाइंड मतलब अगर हमें ये दिख रहा है, बाउंड्री दिख रही है, तो हम कहेंगे इसको डिफाइंड न्यूक्लियस है, और जिसमें हमें ऐसे 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 दिख रहा है कि हमें कुछ रखा हुआ है, ऐसे क्लियर नहीं है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, सो दैट इज नॉट न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, इसको नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरिया डजंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, जिसमें कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस एंड प्रो मतलब होता है बेटा फॉल्स न्यूक्लियस, मतलब इसमें है नहीं, फॉल्स न्यूक्लियस। सब इस टेबल को बनाओ बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हैव nucleus, well defined nucleus, so they are eukaryotes, you means true, सही में, सच में, so they have nucleus, fungi is multicellular and eukaryotes both, so that is about this। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जो इसको जो है एडवर्स कंडीशंस में बचाती है, ठीक है। जैसे हम अभी इस कमरे में हैं, आप अपने क्लासरूम में हो, बाहर बहुत गर्मी है, गर्म हवा चल रही है, लेकिन आपके रूम तक नहीं आ रही, उतनी गर्मी है लेकिन उतनी गर्म हवा अंदर नहीं आ रही, रीजन यू हैव दैट प्रोटेक्शन अराउंड यू, आपके चारों तरफ एक वॉल है। सिमिलरली सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन होती है जो उसके अंदर जो सामान है उसको बचाती है, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। तो अब जो बैक्टीरिया है उसके पास भी सेल वॉल है,
जिसका मटेरियल अलग है। अगर हम कहें पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। अगर हम यूकैरियोट्स सॉरी प्रोटोजोआ की बात करें, दे हैव सेलुलोसिक, अगर है, सभी में नहीं होती, सेलुलोसिक सेल वॉल। फंजाई की सेल वॉल अलग मटेरियल की बनी होती है, दैट इज काइटन सेल वॉल। तो सबका देखो बेटा कंपोजिशन ही अलग है। हम इजिली कह के देख सकते हैं, अगर बैक्टीरिया कोई चीज हमें कहते हैं यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है और पेप्टिडोग्लाइकन है, वी कैन इजिली से इट्स बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया ही हो सकता है। अगर हम कहते हैं यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोटोजोआ, जिसमें हम अमीबा, जिसमें पैरामीशिया, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं कोई चीज मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट भी है, ओके, एंड हैव काइटन सेल वॉल, दैट इज फंजाई, ठीक है। अगर अब आता है, अब आप सोचोगे मैंने वायरस लिखा है बट आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द वायरस। रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बेटा ध्यान से सुनो। ये जो तीन है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, these are living organisms। अब आप कहोगे वायरस क्या लिविंग नहीं है? There is a conflict। अभी इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्लियर नहीं है, इट्स अ बाउंड्री, इट्स ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वाई सो? वायरस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर होता है, मतलब अभी वो किसी के अंदर एंटर नहीं किया है, तो वो डेड होता है। अब वो डेड क्यों होता है, क्यों हम उसे डेड कंसीडर कर रहे हैं? रीजन इज वायरस के पास खुद की, ओके, नोट डाउन बेटा अबाउट द वायरस। वायरस के बारे में लिखो, दे डोंट हैव, दे डू नॉट हैव, क्या नहीं है उनके पास? मशीनरी, ऑन मशीनरी। कौन सी मशीनरी? किस चीज के लिए? कौन सी मशीनरी नहीं है? रेस्पिरेशन। वो बाहर खुद से सांस नहीं ले सकता, डाइजेशन नहीं कर सकता, प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे जिंदा रहने के लिए, जो हमारे जिंदा रहने के लिए बेसिक हमारे सिस्टम्स है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। बाहर ये सब चीजें उसके पास नहीं है, उसके पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है दैट कैन परफॉर्म रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो वायरस आता कैसे है, या तो वायरस हवा के साथ हमारे सांस में आ जाए, या फिर वो कहीं, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट में पड़ा है, हमने उसको टच किया और अपने मुंह पे, अपने फेस पे, अपने मुंह खाना खा रहे हैं, वही डर्टी हैंड से खा लिया, तो इट कैन एंटर इन आवर बॉडी। अब जब वो हमारी बॉडी में आता है, उसको क्या मिलता है? ये सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। रेस्पिरेशन के लिए उसको जो हमारे सेल मिल जाते हैं, डाइजेशन के लिए सेल मिल जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए हमारे सेल्स मिल जाते हैं। अब वो हमारे सेल्स के, जो हमारा सेल ये काम करता है, हमारे सेल से ये सारी चीजें ले लेता है और खुद अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा बन के सारे काम करता है। अब जो वायरस के पास एनर्जी आ गई, क्योंकि अब उसको ये सब मिल गया, ठीक है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, वो अपने जैसे और वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर बना रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे सेल्स वीक हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो अपना मशीनरी, अपना काम जो है, जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलने थे, वो सब तो वायरस ले रहा है। तो इसीलिए वायरल की जो डिजीज है बेटा, वो इजिली ट्रैक नहीं होती और इजिली क्योर नहीं होती। अब आपको एक और चीज बताऊं, हम जब बीमार होते हैं हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, मगर आपको पता है कोई भी एंटीबायोटिक वायरस के लिए नहीं है, क्योंकि जो वायरस है तो उसकी खुद की मशीनरी नहीं है, और दूसरा जो वायरस है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। उसकी जैसे अगर हम कहो ना, कोई अगर आप कहो कि क्लोन है, आपने कई मूवीज भी देखी होगी, कार्टून भी देखे होंगे, हम दिखाते हैं कि अभी इन्होंने ये अपनी शक्ल बना रखी है, थोड़ी देर बाद कोई और शक्ल बना ली है, सो वी कांट रिकॉग्नाइज दैम। तो सिमिलरली वायरस चेंज इट शेप वेरी ऑफन, और उस वजह से कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता कि यस दिस इज द वायरस। और इसीलिए जब कोरोना कोविड हुआ था, सो इजिली उसकी मेडिसिन नहीं बन पा रही थी, क्योंकि जैसे जिस कोरोना के लिए वो बनाते थे, वो अपनी शेप चेंज कर लेता था,
फिर तो उनको बनानी पड़ती थी, तो दैट इज वाई। ठीक है, तो वायरस जो है इसीलिए दोनों कैटेगरी में अगर हम के पुट नहीं कर सकते, आप कुछ भी कह सकते हैं ना। इज इट क्लियर? Yes, is it clear why virus is living or non-living? Oh, that's good. So that is the reason. I hope it is clear to everyone now. Yes, everyone, it is clear. Yes. Yes. So now tell me, do you have this assignment with you? चलो assignment निकालो. Take out your assignment. Take out your assignment, everyone. और pencil निकालो. Take out pen pencil. Socrates, just Karan is there. Socrates, just Karan. फटाफट आ जाओ, come forward. Just Karan from the Socrates. Socrates से बेटा just Karan is there. Yes बेटा जल्दी आओ, आपको अपना नाम तो पता ही है. Yes, come fast. Do you know your name ना? So come fast. Why you are taking so much time? So yes बेटा tell me, इसको हम क्या कहते हैं? It's in your textbook also. What it is called? ये क्या है? Socrates, turn on your mic. बेटा mic on करो from the Zoom. From the Zoom, turn on the mic. Virus. Yes, it is virus. ठीक है, the virus. Sit down. अब आ जाते हैं Tolstoy से लक्ष्य from the Tolstoy. बेटा जिसका नाम लो फटाफट आ जाओ, क्योंकि आपकी भी तो भी क्या कहते हैं छुट्टी होने वाली, जल्दी से करना है ना. So do it fast. Tolstoy. Yes, Tolstoy बेटा जल्दी से आओ. लक्ष्य is there. माइक किसके पास है बेटा? माइक जिसके पास है, please turn on the mic and say or confirm whether that Lakshya is present or not. आपकी yes बेटा बताओ ये क्या है? 3 minutes बैक्टीरिया. क्या है ये? बैक्टीरिया. So which bacteria? Yes, it's bacteria. We can say that. Yes. Okay, sit down. So from Plato, Harjot is there. Plato, Harjot. I think Plato's video is off. Yes. If you can, please turn on your video. Plato. Yes, Plato. Plato say Harjot आ जाओ. I think your mic is working or not. Yes, Plato is there. Okay, Miletus से आ जाओ. Parinur. Miletus, Parinur. Parinur from Miletus. Yes, beta. Miletus, from mic. Turn on your mic. Yes, turn on. Yes. Tell me what is this? आपकी वर्कशीट में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? What is this? What this structure is called? क्या कहते हैं?
It's not fungi. सब ध्यान से सुनो. It is called fungi. It's not fungi. It's fungi. ठीक है? So yes, it's fungi. Okay. Now coming to next. Now Russell. Russell से आ जाओ मनजोत. Manjot from Russell. Come fast. I think सबको पता है कि आपका नाम क्या क्या है. सबको पता है ना मनजोत कौन है. चलो मनजोत आ जाओ. तो बताओ मनजोत क्या आपकी कहते हैं. What it is? मशरूम. अब मुझे बता सकती मशरूम है क्या. प्लांट है, एनिमल है, क्या है. मशरूम है क्या. अभी जो हमने 4 जो चीजें पढ़ी उसमें से किसी कैटेगरी में आता है ये. Fungi. Yes, sit down. Sit down. Sit down. Sit down. So yes, you are right. It's fungi. Water से आ जाओ रश्मि. Water से रश्मि. Now tell me what is this. ये भी आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है. What is this? Yes, water से पेनिसिलियम. पेनिसिलियम. अच्छा, बहुत क्लेवर है सारे बच्चे है ना. नीचे लिखा हुआ है तो यू कैन रीड इट वेरी फास्ट. अब मुझे बताओ पेनिसिलियम है क्या. ये आप ही के लिए दे रखा था ताकि आप बताओ पेनिसिलियम है क्या. It's in your textbook. It is given in your textbook. It is used where? Very first time. Yes, बताओ बेटा. रश्मि वाटर से. Turn on your camera, mic. Mic on करो. Yes, Rashmi. Yes, teacher is there in this section. Water. Yes, sir. Please help. Rashmi. Yes, madam. Sir, Rashmi, to please stand and Come. ये पेनिसिलियम है क्या. क्या है. इज इट बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और व्हाट. क्या है. यस, पेनिसिलियम इज व्हाट. कौन सा माइक्रोब. बताओ पेनिसिलियम. अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में एक चीज बता रखी है एंटीबायोटिक है ना. टाइमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई थी. तो वो एंटीबायोटिक किससे बनाई थी. सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनी थी किससे बनी थी. सिट डाउन बेटा. अच्छा, कौन कौन सी क्लास से मुझे कोई बता सकता है ये जो पेनिसिलियम है एंटीबायोटिक से कैसे रिलेटेड है. हाउ इट इज रिलेटेड टू द एंटीबायोटिक. So Militus, I can see last row में second last bench girl. Yes, yes, yes बेटा आ जाओ. Second last bench. आ जाओ. I think she is sitting next to the sir. Yes, आ जाओ. Yes, come fast बेटा. You raised your hand. Now come fast. Come fast. How this penicillium is related to the antibiotic? Tell me this. The mic is off. Turn on the mic. Now, एक मिनट. एक मिनट बेटा आप चुप हो जाओ. बाकी प्लीज पूरी क्लास प्लीज बी साइलेंट सो दैट आई कैन हियर हर. मैं उसको सुन सकूं तो आपको एक मिनट चुप होना पड़ेगा. बाकी सब प्लीज साइलेंट. यस बेटा, नॉट स्पीक अप. Jelly-like structure called jelly-like substance called cytoplasm. माय क्वेश्चन वाज. अब बेटा ध्यान से सुनना. मेरा क्वेश्चन था ये जो पेनिसिलियम है ये एंटीबायोटिक से कैसे रिलेटेड. एंटीबायोटिक क्या होती है. जो हम खाते हैं जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर कहता है कि एंटीबायोटिक लो और ठीक हो जाओ. एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट होना, ऑपोजिट होना. ठीक है.
बायोटिक होता है लिविंग, ठीक है। अगर हम एंटीबायोटिक वर्ड में बार बार यूज कर रही हूँ, यू शुड नो, और आपको तो मुझसे पूछना चाहिए था कि ये क्या होता है। एंटी मतलब हो गया अगेंस्ट, ठीक है। बायोटिक मतलब हो गया लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट करना काम। लेकिन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक माइक्रोब्स, जर्म्स जो हमारी बॉडी में हमें हार्म पहुंचा रहे हैं, उसके अगेंस्ट वर्क करती है। कैसे? ये भी हम माइक्रोब से ही लेते हैं। कुछ माइक्रोब्स जो है दूसरे माइक्रोब्स को मारते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। तो उन माइक्रोब्स से कुछ उनका पार्ट लेके एंटीबायोटिक बनती है, वैक्सीन्स बनती है, जो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। वो जो माइक्रोब हमारे अंदर है उनको नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक से कैसे लिंक करता है। तो जो फ्लेमिंग था जिसने फर्स्ट टाइम, ठीक है, ध्यान से सुनो एवरीवन, जिसने एंटीबायोटिक की खोज की थी, ही इन्वेंटेड एंटीबायोटिक थ्रू अ फंजाई, एक फंजाई जिसका नाम था पेनिसिलियम, और उसने पहली जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, ठीक है, वो इन्वेंट की थी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। फंजाई को यूज किया था बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो उसको पता लगा अगर हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके कुछ फॉर्म को लेके दूसरे के अगेंस्ट यूज करें तो हम उसको मार सकते हैं। सो दिस इज हाउ एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। इज इट क्लियर? ओके, सिट डाउन बेटा। चलो फिर लास्ट वाला कौन बताएगा? ओके, so now desperate is there? No, I think Karl Marx. So Karl Marx से कौन बताएगा मुझे लास्ट वाला? हैंड रेज करो, what this structure is. Okay, first bench boy, अच्छा बेटा फटाफट, what is the structure? Amoeba. Amoeba, yes, it is amoeba. It is amoeba, that's right. ठीक है, तो this is all about this images, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में। So for MCQ, I am calling from Socrates Sahib Preet. Sahib Preet, आजो बेटा। Which of the following statements best distinguish between bacteria and fungi? तो ये 4 स्टेटमेंट्स है, इसके बेसिस पे आप बताओ कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। कह सकते हैं कि फंजाई ये है और ये बैक्टीरिया है। अच्छा चलो स्टेटमेंट वाइज जाते हैं। कौन सा? सी, ओके, यू आर सेइंग सी, सो लेट्स सी हियर। अब इसको हम देखते हैं, इसको ध्यान से सुनना बेटा, एवरीवन लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नो, अभी तो हमने पढ़ा था फंजाई मल्टी सेलुलर था, ओके, इट इज मल्टी सेलुलर, बट बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाती है, ए इज रॉन्ग, ठीक है। बैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड, फंजाई कैन नॉट, ऐसा तो नहीं है, बैक्टीरिया इज नॉट फोटोसिंथेटिक ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे भी गलत हो जाता है, वो तो प्लांट है, और कुछ साइनोबैक्टीरिया है दैट इज लिमिटेड, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। सी में है फंजाई रिप्रोड्यूस ओनली बाय स्पोर्स, चलो हम कहते हैं ये ठीक है कि स्पोर्स के थ्रू करता है, लेकिन कह रहा है बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस तभी तो बैक्टीरिया हमें फिर इंफेक्शन करता है, ठीक है। लास्ट आता है फंजाई आर यूकैरियोटिक, सो यस ये यूकैरियोटिक है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जबकि बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोट, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको हम नहीं कह सकते इट इज न्यूक्लियस। सो आंसर इज ए का लिखो, वन का सॉरी डी है, वन का आंसर डी है। कमिंग टू 2, उसके लिए आई एम गोइंग टू कॉल टॉलस्टॉय से गोविंद राज फ्रॉम टॉलस्टॉय। So question is, a student observed a microbe.
that has no cell wall can reproduce only inside the and can cause like influenza. कौन होगा बेटा? It's very easy. Yes, beta. What is the answer of question number 2? Right? Question number 2 का क्या आंसर है? Ma'am, B option virus. Yes, it's the virus. ठीक है, virus is the correct answer. Sit down, beta. That's good. Now, from Miletus, Ravijot आ जाओ. Ravijot from the Miletus. Third question. आ जाओ. Sorry, so answer is C. ठीक है, answer is C. And after this, beta, you can leave now. Okay. Try to solve yourself. Okay. Bye, students.